हेलो गाइस, वेलकम टू लिसस लाइव। तो आज हम देखेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट, द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 preamble, whereas it is expedient to consolidate, define the amend the law of evidence. It is hereby enacted as follows. तो गाइस आज हम देखेंगे रिलीवेंसी ऑफ फैक्ट्स। चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी। सेक्शन 1, the short title, Extent and Commencement. This act may be called the Indian Evidence Act 1872. It extends to the whole of India and applies to all judicial proceedings in or before any court, including court martial, other than court martial convened under the Army Act. The Naval Discipline Act, the Indian Navy Discipline Act 1934 of 1934, or the Airports Act, but not to affidavits presented to any court or officer, nor to proceedings before an arbitrator, and it shall come into force on the first day of the September 1872. तो ये था फाइनली हमारा सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। तो चलिए अब देखते हैं सेक्शन 2। सेक्शन 2 रिपील हो चुका है, रिपील ऑफ एनेक्टमेंट्स, रिपील बाय द रिपीलिंग एक्ट 1938 1 ऑफ 1938 सेक्शन 2 एंड commencement of act, and it shall come into force on the first day of September 1872. So title commencement act. तो गाइस वीडियो से आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे जो भी वीडियो अपलोड होगा उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचेगा, ताकि आप लोग वो वीडियो देख सकें और वीडियो का आनंद ले सकें। तो गाइस आगे से हमारे चैनल पर आएगा इंडियन एविडेंस एक्ट का इम्पोर्टेंट सेक्शंस और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का इम्पोर्टेंट सेक्शंस, इंडियन पेनल कोड का इम्पोर्टेंट सेक्शंस, ये सब सारे चैप्टर्स का आएगा। गाइस तो आपको अगर किसी वीडियो में स्पेशल वीडियो चाहिए या फिर कुछ नई तरह की वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो जाकर हम आपके कमेंट के जरिए जान पाएंगे और वीडियो आपको अवेलेबल करा पाएंगे। तो चलिए देखते हैं सेक्शन 3 of Indian Evidence Act. Interpretation clause. In this act, the following words and expressions are used in the following senses, unless a contrary intention appears from the context. Court. Court includes all judges and magistrates and all persons except arbitrators legally authorized to take evidence. Fact. Fact means and includes anything, state of things, or relation of things capable of being perceived by the senses. Any mental condition of which any person is conscious. तो चलिए देखते हैं अब illustrations. That there are certain objects arranged in a certain order in a certain place is a fact. Second, B. That a man had or saw something is a fact. That a man certain words is a fact. That a man holds a certain opinion, has a certain intention, acts in good faith or fraudulently, or uses a particular word in a particular sense, or is or was at a specified time conscious of a particular sensation is a fact. That a man has a certain reputation is a fact. तो गाइज ये था हमारा फैक्ट, और क्या क्या फैक्ट हो सकता है ये सब उसका एग्जाम्पल था और इलस्ट्रेशन में जो बताया गया था उसमें। और आगे देखिए हम आगे पढ़ेंगे रिलीवेंट। तो व्हाट इज रिलीवेंट, क्या होता है रिलीवेंट, रिलीवेंट क्या होता है। अगर कुछ चीज़ें कहीं पर प्रजुज्य होता है तो उसे रिलीवेंट बोला जाता है।
तो आप समझ गए होंगे व्हाट इज़ रिलीवेंट एंड रिलीवेंट क्या हो सकता है और किस परिस्थितियों में और किस चीज़ों में हो सकता है रिलीवेंट। ये जो इंडियन एविडेंस एक्ट है ये बहुत ही आसान है, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। Relevant. One fact is said to be relevant or to another when the one is connected with the other in any of the ways referred to in the provisions of this act relating to the relevancy of facts. तो ये था relevant, बहुत ही आसान शब्द में लिखा हुआ है, आपको समझ आ चुका हुआ। तो देखते हैं फैक्ट इन इशूज। फैक्ट्स इन इशूज, the expression facts in issue means and includes any fact from which either by itself or in connection with the other facts the existence, non-existence, nature or extent of any right, liability or disability asserted or denied in any suit or proceeding necessarily follows. Explanation: whenever under the provisions of the law for the time being in force relating to civil procedure any court records an issue of fact, the fact to be asserted or denied in the answer to such issue is a fact in issue. तो ये था फाइनली हमारा फैक्ट्स इन इशू। फैक्ट्स इन इशू क्या होता है, फैक्ट इन इशू क्या होता है, आप समझ ही गए होंगे। अगर नहीं समझ आया तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए, आप जरूर समझ आ जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं इलस्ट्रेशंस। इसका इलस्ट्रेशंस क्या क्या दिया हुआ है अब देखते हैं। ए इज एक्यूज्ड ऑफ द मर्डर ऑफ बी। एट हिज ट्रायल द फॉलोइंग फैक्ट्स मे बी इन इशू: that A caused B's death, that A intended to cause B's death, that A had received grave and sudden provocation from B, that A at the time of doing the act which caused B's death was by reason of unsoundness of mind incapable of knowing its nature. तो इसके साथ हमारा फैक्ट्स इन इशू का इलस्ट्रेशन भी ख़त्म हो गया। तो चलिए अब इसके बाद देखते हैं डॉक्यूमेंट। व्हाट इज डॉक्यूमेंट? डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मीन्स ऑफ लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स और बाय मोर देन वन ऑफ दोज मीन्स intended to be used or which may be used for the purpose of recording that matter. तो ये था डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट जो हमने अभी डिस्कस किया, अगर आपको समझ ना आए तो दोबारा देख लीजिए, रिपीट कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं अभी इसका इलस्ट्रेशन क्या होता है। डॉक्यूमेंट का इलस्ट्रेशन: ए राइटिंग इज ए डॉक्यूमेंट। Words printed, lithographed or photographed are documents. A map or plan is a document. An inscription on a metal plate or stone is a document. A caricature is a document. A caricature is a document. तो इसके साथ ख़त्म हुआ हमारा डॉक्यूमेंट और उसका इलस्ट्रेशंस। तो चलिए अब देखते हैं एविडेंस। व्हाट इज एविडेंस? एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स ऑल स्टेटमेंट्स व्हिच द कोर्ट परमिट्स और रिक्वायर्स टू बी मेड बिफोर इट बाय विटनेसेस इन रिलेशन टू मैटर्स ऑफ फैक्ट अंडर इंक्वायरी। Such statements are called oral evidence. All statements which the court permits or requires to be made before it by witness in relation to matters of fact under inquiry. Such statements are called oral evidence. तो ये था oral evidence। किसे बोलते हैं आपको समझ आ गया होगा। अब सेकेंड नंबर का देखते हैं। All documents including electronic records produced for the inspection of the court. Such documents are called
डॉक्यूमेंटरी एविडेंस, सच डॉक्यूमेंट्स आर कॉल्ड डॉक्यूमेंटरी एविडेंस। तो ये था हमारा डॉक्यूमेंटरी एविडेंस। प्रूव्ड क्या होता है? ए फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड व्हेन आफ्टर कंसीडरिंग द मेथड्स बिफोर इट द कोर्ट आइदर बिलीव्स इट टू एग्जिस्ट or considers its existence so probable that a prudent may ought, under the circumstances of the particular case, to act upon the supposition that it exists। तो इसके साथ आपको समझ आ गया होगा प्रूव्ड क्या होता है। अगर समझ नहीं आया तो फिर से देख लीजिए, रिपीट कर लीजिए। तो चलिए अब देखते हैं डिस्प्रूव्ड। डिस्प्रूव्ड ए fact is said to be disproved when after considering the matters before it the court either believes that it does not exist or considers its non-existence so probable that a prudent man ought under the circumstances of the particular case to act upon the supposition that it does not exist। Not proved. A fact is said not to be proved when it is neither proved nor disproved, is called not proved. India. India means the territory of India excluding the state of Jammu Kashmir. The expression certifying authority, electronic signature certificate, electronic form, electronic records, information secure, electronic record, secure digital signature, and subscriber shall have the meanings respectively assigned to them in the Information Technology Act 2021 of 2000। तो अब हम देखेंगे सेक्शन 4 में प्रिज्यूम, shall presume and conclusive proof। May presume whenever it is provided by this act that the court may presume a fact, it may either regard such facts suspect as proved unless and until it is disproved or may call for proof of it। Shall presume whenever it is directed by this act that the court shall presume a fact, it shall regard such fact as proved unless and until it is disproved। Conclusive proof when one fact is declared by this act to be conclusive proof of another, the court shall on proof of the one fact regard the other as proved and shall not allow evidence to be given for the purpose of disproving it। सो ये था हमारा सेक्शन 4 से मैं प्रिज्यूम, सेल प्रिज्यूम एंड कंक्लूसिव प्रूफ। आपको जरूर समझ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो फिर से देख लीजिए, रिपीट करके वीडियो को दूसरी बार देख लीजिए तो सब कुछ आसानी से समझ आ जाएगा। तो गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग दिस एंड अगर इसके बाद और सेक्शंस आए तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और अपलोड कोड भी दूंगा।